I am head of the Department of Library and Information Science, University of Delhi. They requested me to take your few sessions. I consented, but the way the things are happening, I am not happy to see that. I am not used to, act in a kind of an environment which has been extended over here. Doesn't matter. Since I have come, so I'll take your class, but then after maybe I'll not be coming to talk to you people. Okay. Now, आपने हिंदी में पढ़ना है, अंग्रेजी में पढ़ना है? बोथ में पढ़ना है. देखिए, आपका जो पेपर है B-109 लाइब्रेरी कैटलॉगिंग थ्योरी, इसका यूनिट 1 है फंडामेंटल कंसेप्ट एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. एंड इन दिस यूनिट the sub contents are library catalog, its definition, objective, purpose and function, history and development of library catalog code, physical forms of catalog and types of catalogs. These are different aspects of it. Okay. Let us start with the first unit. First of all, you should try to understand what a catalog is. कैटलॉग से अभिप्राय क्या है आपका? कैटलॉग का मतलब सूची है ना. क्या अभिप्राय है कैटलॉग से, कभी सोचा है? ऐसा कोई दिन आपके जीवन में नहीं जाता होगा जब आप कैटलॉग जैसी टर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे. आप बाजार जाइए, प्रेशर कुकर खरीदिए, वो आपको कैटलॉग देगा. आप टीवी की दुकान पर जाइए, आप टीवी खरीद के लाइए, वो आपको कैटलॉग देगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स, कौन कौन सी कंपनी के हमारे पास टीवीज हैं. लाइफ में कुछ भी आप करिए, है ना, उसका नाम अलग हो सकता है, लेकिन एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको जानकारी दे रहा है, एक लेमैन के रूप में एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको जानकारी दे रहा है उस विषय विशेष के ऊपर, वो क्या है? वो कैटलॉग है. लेकिन जब हम कैटलॉग का पुस्तकालय के संदर्भ में देखते हैं, व्हेन वी आर लुकिंग द टर्म ऑफ कैटलॉग एज फार एज द लाइब्रेरी इज कंसर्न, वी आर टॉकिंग समथिंग अबाउट ए सिस्टम which is helping us to know what is available in our library. That means a library catalog happens to be a system which tells you about the holding of the library. एक लाइब्रेरी में क्या उपलब्ध है, क्या पाठ्य सामग्री है, उसके बारे में आपको जानकारी मिले, ये लाइब्रेरी कैटलॉग है. ठीक है. अब प्रश्न ये उठता है कि इसकी शाब्दिक अगर आप डेफिनेशन पे जाएं तो व्हाट इट सेज a library catalog is the key to the holding of library. It is an explanatory, logical, arranged inventory and key to the books and other library documents. Now see, it is talking about the logically arranged inventory. यानी महज एक सूची नहीं है, उसके अतिरिक्त कुछ है. उसके अतिरिक्त क्या है कि उसका जो कंपाइलेशन है, उसका जो बनाने की प्रक्रिया है, उसको डेवलप करने का जो तरीका है, वो क्या है? वो लॉजिस्टिकली होना चाहिए, है ना. अगर वो लॉजिस्टिकली नहीं होगा तो फिर वो कैटलॉग नहीं होगा, फिर वो मात्र सूची के रह जाएगी, मात्र एक सूची रह जाएगी, मगर वो कैटलॉग नहीं होगा. तो ये जो लॉजिस्टिक इन्वेंट्री की बात है, this is emphasizing on the need of adopting the prescribed cataloging codes. There are lot of cataloging codes which I'll be just narrating and telling you as far as the history of library code is concerned at a later stage. But as far as you people are concerned, in your syllabus there are two catalog codes which are being used.
One is classified catalog code. The full name of this code is classified catalog code with additional rules of dictionary catalog. This is by Ranganathan, Dr. S.R. Ranganathan. The full name of Dr. S.R. Ranganathan is Shali Ramamita Ranganathan. Okay, the full name of Ranganathan is this. Who is this? Who is this man? This man is considered as father of library science. Now, to whom we say father? Father is the man who is the creator of life, creator of the journey which a person has. And why do we tell Ranganathan as father? Simply because he has created the life of library and information professionals, library information science literature in the entire world. And therefore, being Indian citizen, we people in India have accepted that as far as library science is concerned, Ranganathan happens to be the father of library science. Okay. Apart from many contributions of Ranganathan, one of the finest contribution of Ranganathan is classified catalog code. Unfortunately, this catalog code is dying simply because the people in India, the people like you, the future librarian, the people like me, the present library professional, and all library professionals in this country, we are walking, we are running in accepting of many things which may be influenced by one context or the other, adapting certain kind of things in the name of the application of information and communication technology and many more. But the basic roots and basic fundamental theories being created by Ranganathan have been completely wiped out. And therefore, what is happening is that the application of classified catalog code remains unfortunately restricted to the LIS schools, such as the LIS schools of University of Delhi, where I am representing as a faculty. And since this course which you are the part, it is also the part and parcel of University of Delhi. So the entire course curriculum of the Department of Library and Information Science has been directly in verbatim has been taken up and implemented over here. So basically, the SOL being the organ of University of Delhi, starting the library and information science courses through distance learning, had adopted the entire curriculum of the regular course of Department of Library and Information Science, where the classified catalog code has been accepted as one of the system of cataloging to be taught to all the professionals who are studying in India and trying to protect the legacy of father of library science, not because that we want to just remember the name of father of library science, because we understand that the qualities, that the merits which are there in a classified catalog code to make understand the people of cataloging and to maintain the classificatory part of the catalog in libraries to provide access to the library resources without wasting the time and satisfying the law of library information science, that is the save of the time of the reader of Ranganathan of 5 fundamental laws, is maintained by adopting this kind of a catalog. You know, when we talk of library cataloging, when we are talking of something about the library cataloging objectives and functions, what happens to be the, don't look at what has been given in PPTs, isn't it? Try to listen me what I am trying to teach you. क्योंकि ये मेरा पहला और आखिरी दिन होगा आपके साथ, क्योंकि मैं दोबारा पढ़ाने नहीं आऊंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पढ़ाया कैसे जाता है, समझे ना? ये तो तरीका बस ऐसे ही है. So when we are talking something about the objective of a library catalog, do you know why a library catalog is needed?
It is humanly impossible for any human being to remember what is available in the library collection. After all, what is the capacity of a human brain? We can remember 10, 100, 1000 books by mouth, by heart. Is it possible for us to remember 10,000, 20,000, or lakh of publications available? It is humanly impossible. Maybe the brain of human being is the brain which is the creation of each and everything which is happening in this world. Still, the brain is credited to develop these systems, not to work as a memory of computer to recall each and everything as the computer hard disk do. So, the human brain, by many people in this world, including Ranganathan, gave you a concept of developing a system for cataloging to make a library catalog. Why? The reason being is that the catalog is being maintained in a library to provide you this system of accessing to a book to know what is available in your library. If the system would have not existed, then what would have been the result of it? That you enter in a library for want of a book. Now you have started searching a book in the entire collection of a library, and that library has 10,000 of books. It is by luck that by the time you have checked fifth number of book, that is the book which you are looking for. But this may also happen that by the time you reach to 9,000, you have not found the book which you are looking for. And it may also happen that you have checked the entire collection of the library, but you do not have that book which you are looking for. So, the basic philosophy of save of library time of the user, save the time of the user, is gone. That principle is killed completely. And the value of the time is also killed completely. Have you ever thought of the days I remember when I was a young chap like you, and I had used to go to see a movie on a picture hall, and then I had witnessed with my parents that my elder brother would have been in the queue of waiting to have a ticket of that movie. There was a big rush. Now he's in the queue. He is waiting his turn to come. And by the time his turn come, the person inside the window says house full. The whole time of waiting for having the hope to get a ticket of a picture has been resulted into no result of it. What would have been the mindset and reaction of a person? Oh my God, what is my luck? If you are a filtered, seasoned person, you would have used this term, अरे यार, किस्मत ही खराब है. आधा घंटे पहले या 15 मिनट पहले आ गया होता, मेरे से आगे वाले को 2 मिनट आगे वाले को टिकट मिल गई, थोड़ा जल्दी आ गया होता, थोड़ा घर से जल्दी निकलते. अरे मैं क्या करूं यार, ये मम्मी लेट करा देती है ना. पापा की तो बात ही अलग है. दुनिया भर की बातें हमारे दिमाग में आ रही होती. क्यों? क्योंकि हम अपने कार्य को सफल करने में कामयाब नहीं हुए. ऐसे ही अगर आप लाइब्रेरी में किताब को खोजने के दृष्टिकोण से आए हैं और वो सिस्टम डिस्टॉर्टेड है और वो सिस्टम आपकी मदद नहीं कर पा रहा और सारी किताबें देखने के बाद भी आपको किताब नहीं मिली, तो आपके मन में इसी प्रकार के विचार है, क्या सिस्टम, ये कोई तरीका है? 2 घंटे मेरे खराब हो गए, क्या काश कोई ऐसा सिस्टम होता कि 2 मिनट में मुझे पता लग जाता है किताब है या नहीं है, तो मैं अपने 2 घंटे खराब ना करता. दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए लाइब्रेरी कैटलॉग. That is the objective of a library catalog. But how to develop that system? How to develop that system? That system has to be developed on the basis of certain scientific principles, isn't it? And therefore,
The two internationally known cataloging codes came into existence. One is Classified Catalog Code of Ranganathan, another is Anglo-American Cataloging Rules. Now different versions of Anglo-American cataloging rules have come, ACR2, ACR2R and ACR2 revised version. But you are talking and you will be taught by people who will be teaching you practical cataloging here using ACR2R only. So what is happening? That you have a tool in the library. Now in that tool you are searching whether the book is there or not. But whether that tool has been developed, designed a fashion in such a manner, your time is saved, your purpose of accessing the catalog is being served, is the question of importance. And therefore, the basic function happens to be a catalog is that catalog should be able to tell and satisfy your search according to the search variable which you have in your mind. You understand what I am saying? एक कैटलॉग कैसा हो कि जब आप लाइब्रेरी में किसी किताब को पाने के उद्देश्य से प्रवेश करें और उस कैटलॉग का इस्तेमाल करना शुरू करें तो वो कैटलॉग ऐसी विविधताओं के साथ बनाओ कि आप जिस भी तरीके से जिस भी फीचर के आप उस किताब की जानकारी जो आपके मस्तिष्क में है उसे पाने के दृष्टिकोण से उसे लेने के दृष्टिकोण से लाइब्रेरी में आए हैं तो आपको पता लगे. तो नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाट अगेन कि व्हाट विल बी योर अप्रोच टू एक्सेस टू द बुक. इफ you have to come to the library and if you want to access a book, what will be your approach? How you will access to a book? कैसे ढूंढेंगे? एक एक करके. लाइब्रेरियन को नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं करेंगे. अगर आपको अपनी सिस्टर के यहाँ जाना है, शादीशुदा लड़की आपकी सिस्टर है, शादी के बाद आप अपनी बहन से मिलने जा रहे हैं, तो सबसे जरूरी आपको क्या चाहिए? एड्रेस. बिना एड्रेस के पहुंच नहीं सकते ना. तो एड्रेस में क्या क्या जानकारी हो सकती है? घर का एड्रेस हो सकता है, उसके आसपास की जगह की चीजें हो सकती हैं, है ना. कोई विशेष पहचान हो सकती है. जैसे जब मैं यहाँ निकला आज आने के लिए तो दिस कॉलेज इज सिचुएटेड एट ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्लेस, वेरी कॉम्प्लेक्स प्लेस. बहुत सारे मोड़ आने के बाद गाड़ी से पहुंचा जाता है. ये बच्चे साथ नहीं होते तो पहुंच ही नहीं पाता. समझ रहे हैं? तो ये कॉम्प्लेक्सिटी खत्म करने के लिए कैटलॉग को बनाया गया. तो एक लाइब्रेरी में जब आप किताब खोजने आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको किताब का खाली ऑथर पता हो. ऑथर बताओ कि आपको किताब किसकी चाहिए. आपको केपी सिंह की किताब चाहिए, आपको बीके शर्मा की किताब चाहिए, आपको एसके वर्मा की किताब चाहिए और किसी की भी. हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप यहाँ जितने भी हैं, मान लीजिए कुछ क्षण के लिए कि आप ऑथर हैं किसी किताब के. आपके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, है ना. हर एक का कॉमन नाम नहीं है ना. किसी का एक्स नाम है, किसी का वाई नाम है, किसी का जेड नाम है, और आप सब लेखक हैं और आपकी सबकी किताबें इस लाइब्रेरी में है. वो लाइब्रेरी मैं हूं, है ना. और ये मेरा कैटलॉग है. और अब आप आकर कह रहे हैं कि मैं मिस्टर वर्मा की किताब ऑन हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरीज है क्या लाइब्रेरी के अंदर. तो लाइब्रेरियन एज यू सेड कि लाइब्रेरियन से पूछेंगे तो लाइब्रेरियन का क्या जवाब होगा? लुक एट द कैटलॉग. हिज आंसर विल बी दैट ओनली. जेंटलमैन, गो टू द कैटलॉग एंड सी. Then you will come to know in what way this catalog is arranged, whether it is alphabetically arranged or it is arranged according to classified sequence. Understand? So if you are looking at the book with the author, your catalog should be able to tell you whether the book is available in the library or not
under the name of the author. This is one objective, also the function of a library catalog. This is one objective, also the function of a library catalog. आप समझ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, पर्पज, ये सारे सिनोनिमस हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसकी रही भावना जैसी और तीज मुरद्दिन देखी वैसी। किसी भी एक बात को ऑब्जेक्टिव के रूप में देखोगे तभी भी वही अर्थ है, और किसी को फंक्शन के रूप में देखोगे तभी भी वही अर्थ है। यानी कि ऑथर के नाम से आप किताब एक्सेस कर रहे हैं, तो एक लाइब्रेरी कैटलॉग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द रीडर टू एक्सेस ए बुक under the name of a author. Or what is the function of a catalog? To provide the information to a reader under the name of a author. Understand? समझ रहे हैं ना? And what is the purpose? To provide the information to a reader to access the information of a author. तो आपके ऑथर की रिक्वायरमेंट, अगर वो कैटलॉग सिस्टमैटिकली ऑथर सर्च को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पूरी हुई। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपको किताब का ऑथर का नाम ही नहीं पता है। बहुत बार आपको ऑथर का नाम नहीं पता होता। आपको क्या पता है? किताब का टाइटल पता है। यू जस्ट नो द टाइटल ऑफ द बुक। अंडर दैट सिचुएशन व्हाट हैपेंस? You again come to the library and ask the librarian, sir, the book of history of libraries is available in your library or not? What the librarian will say? Go to the catalog. Go to the catalog. What is the catalog? Catalog in my hand. You again started searching. Under title. Under title. Now title is history of libraries. The catalog is arranged according to alphabetic sequence. So you will start searching as you search a term in a dictionary, HIST, and you know the basic logical system of looking into the dictionary is to first see first three letters, and then nearby you find the word which you are searching. So the moment in the catalog which is arranged in an alphabetic sequence, you start searching, you find what? What you find? You find HIS. If the history of library book exists, nearby you will find the catalog card is there. Then it contains the entire bibliographical information of the book. Okay? So you title say you started searching. You started searching. And the second objective is of the catalog is to provide information to access the book under the name of the catalog. Function भी क्या हुआ? To help the reader to find out the book under the title. और purpose भी क्या हुआ? To provide. You understand what I am saying? They are synonymous to each other. The thing is that how you are going to define while writing your answer in the copy. But happens to be the one or the same meaning. Understand? But these are the only two searches, author and title. But a book has many other variables through which it can be searched. समझ रहे ना? अब ऑथर भी नहीं पता आपको और टाइटल भी नहीं पता आपको, किताब चाहिए, है ना? अगेन यू वेंट टू लाइब्रेरी कि सर किताब चाहिए, ना तो मुझे उसका ऑथर पता है और ना ही मुझे उसका टाइटल पता है। तो भाई देवी जी मैं पढ़ा लूं प्लीज, है ना? आपको मौका देंगे क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है, तो थोड़ा ध्यान दें इस बात को, थोड़ा बात ना करें। ये खत्म होगा सेशन में, मैं आज जाने से पहले तुम्हारी सारी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करूंगा क्योंकि मैं दोबारा नहीं आऊंगा। ओके? क्योंकि ऐसे सिस्टम में पढ़ाना डिसरेस्पेक्टफुल थिंग। ओके? तो मैं भूल भी जाता हूँ, बीच में डिस्टर्ब ना करें प्लीज। तो अब आप आए, लाइब्रेरियन साहब के पास गए, सर किताब चाहिए। लाइब्रेरियन साहब कहेंगे सर कौन सी किताब चाहिए, क्या ऑथर है, सर पता नहीं है। अच्छा क्या टाइटल है, सर पता नहीं है। अब लाइब्रेरियन आपको देखता है, आप लाइब्रेरियन को देखते हैं, लेकिन आपको किताब चाहिए,
आपको एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता है जो आपको पढ़ने के लिए चाहिए, जिसका पढ़ा जाना आपके लिए बहुत जरूरी है, भले ही वो परीक्षा का विषय है, भले ही आपके ज्ञान पिपासा को दूर करने का विषय है, भले ही कोई भी कारण है, एक पुस्तक को प्राप्त करने की इच्छा से आप पुस्तकालय में आए हैं। बदकिस्मती से आपको उस पुस्तक के ऑथर और टाइटल की जानकारी नहीं, तब भी कैटलॉग की क्या ऑब्जेक्टिव है, तब भी कैटलॉग का क्या पर्पज है, तब भी कैटलॉग का क्या फंक्शन है, तब भी क्या फंक्शन है, क्या है बेटे, कि वो बावजूद इसके कि आपको ऑथर और टाइटल के बारे में नहीं पता है, वो आपसे जानकारी निकलवाने का प्रयास करे। Here is the role of the library. Ranganathan has given you the concept of what? Concept of reference service, reference questioning. He asked, librarian asked कि बेटे आपको ऑथर भी नहीं पता है, आपको टाइटल भी नहीं पता है, अच्छा आपको एक चीज जरूर पता होगी, और जीवन में हमेशा याद रखें, कोई भी निकम्मे से निकम्मा विद्यार्थी पाठक अगर पुस्तकालय में आ रहा है तो उसे उस पुस्तक विशेष के बारे में एक बात जरूर जानकारी होगी, एक बात जरूर पता होगा, और वो क्या है, उस पुस्तक का विषय। विषय तो पता ही होगा ना कि सर मुझे हिस्ट्री किताब पढ़नी है, या मुझे पॉलिटिकल साइंस की पढ़नी है, या मुझे इकोनॉमिक्स की पढ़नी है, या मुझे मैथमेटिक्स की पढ़नी है, मुझे एल्जेब्रा पढ़ना है, मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, मुझे मैथमेटिक्स पढ़ना है ना। आप सबको अपना अपना विषय पता है ना। आपने ग्रेजुएशन किया होगा, आपने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में किया होगा ना। तो अब आपको ऑथर नहीं पता है, टाइटल नहीं पता है कि सर मुझे और सब कुछ नहीं पता है, मुझे ये पता है कि मुझे ना मेरी जो किताब है ना वो हिस्ट्री के ऊपर है या पॉलिटिकल साइंस के ऊपर है। Then he says go to catalog. Then again direct, you again come on this paper, you start searching under what subject. What is your subject? हर subject is history, your subject is classification, your subject is cataloging, हर subject is mathematics, हर subject is geography. You have started searching your subject in the catalog, and then the catalog tells okay, yes I do have. Now while searching the book under subject, you start recalling that the name of the author is Mr. Gupta. While searching, now your curiosity has become much more. Now you do not want anything else. You want the book on geography of Mr. Gupta. But catalog says, sorry, we do not have book of Mr. Gupta. We have book on geography by Mr. Sharma. For a fraction of time, you think, and then you thought, it is always better than nothing. You wanted to read something, and then it is the probability that the book of Gupta may not be as good as book of Sharma. You were told by somebody that Gupta's book is good, but maybe that fellow who is recommending has not gone to see the book of Sharma. So the moment you got the book of Sharma, you read, you found blessing in disguise. कि यार गुप्ता को लेने गया था और शर्मा मिल गया, वंडरफुल बुक है। तो कैटलॉग का क्या ऑब्जेक्टिव हुआ कि विषय विशेष पर स्पेसिफिक ऑथर, स्पेसिफिक टाइटल की किताब नहीं है, तो भी किसी ऐसी किताब जो उस विषय को बता रही हो प्रोवाइड करे। by this subject, okay, है ना। then what catalogs do, what is the objective, कि भी ऑथर भी हो गया, टाइटल भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया। अब आप फिर आगे कि सर मुझे नहीं मालूम कौन ऑथर है, मुझे नहीं मालूम क्या टाइटल है, हाँ मुझे ये पता है कि उस किताब का एडिटर मिस्टर एक्स है। It is the responsibility of the cataloging system that you should be provided the information with the editor's name also. So what is the objective of a catalog? Provide information with the editor. Understand? Function editor, purpose editor. Now there are terms like editor, like translator, like illustrator,
like revisor. These terms are called as the terms of collaborators. They are called as collaborators. So a book which has been written by any collaborator do have the right to reach to the reader through this systematically developed library catalog and provide that information to the reader. Look, I am here. Now, again, the collaborators has been exhausted, the author has been exhausted, the title has been exhausted, the subject has been exhausted, but there are books which are written as a chapter of a book by authors, and they books are published under the title and under the editorial publication. तो एडिटर मिस्टर गुप्ता है और अंदर ऑथर मिस्टर शर्मा भी हैं, वर्मा भी हैं और खुशावा भी हैं और कुआवा भी हैं और पता नहीं क्या क्या। किताब का नाम अलग, टाइटल अलग, अंदर दिया हुआ कंटेंट अलग। तो कैटलॉग क्या कहता है? खाली यही नहीं भाई, किताब के अंदर भी जो कुछ दिया हुआ है ना, मैं तुम्हें वो ही बताऊंगा यदि आपको पता है। यदि आपको पता है, आप आकर कहते हैं कि किताब है सर, उसका टाइटल मुझे नहीं पता है, उसका ऑथर, उसका एडिटर मुझे नहीं पता है, लेकिन उसमें एक आर्टिकल छपा है, किसका छपा है? आर के भट्ट का छपा हुआ है। कैन यू हेल्प मी? द कैटलॉग with the analytical entry will tell you that yes, this book is available in the library. This is also the purpose, need, purpose and function of a catalog. यहां तक बात समझ में आ गई है? समझ में आ गई? कुछ पूछना है? यहां तक पूछना है किसी प्रकार की कोई बात? बेटे किसी ने पूछना है? आपने पूछना है? हेजिटेट ना करें, जो कोई पूछना आज पूछ लें। मैं बाबा कर रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। मुझे ये एनवायरनमेंट, आप तो मुझे सूट कर रहे हैं, लेकिन वो एमली वाला सूट नहीं करा, 2 बच्चों के बैठने का। ठीक है, आगे बात समझ में? फाइन। अब नेक्स्ट जो इशू है वो क्या है? हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग कोड्स। अब देखिए, इतिहास किसका सगा सुबेरे रटा और रात रटा और सुबेरे सफा। तो जिस मैराथन तरीके से मैंने आपको ये बात समझाई है, इतिहास को समझाना मुश्किल काम होता है, क्योंकि इतिहास कॉन्क्रीट होता है ना, स्ट्रक्चर्ड होता है। जरा खोलिए पीपीटी। ये सब तो हमने बता ही दिया आपको इसमें जो लिखा हुआ है। ठीक है, बोलिए। आइए बेटा, आप देखिए हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग कोड्स। लाइब्रेरी के अंदर जो भी किताबें हैं वो आसानी से बिना समय खराब करे पता लगे कि क्या अवेलेबल है, यूजर के टाइम को सेव किया जा सके। ये कोई आज की आवश्यकता नहीं है, ये पुस्तकों के लिखे जाने, उनके संग्रह से ही इस प्रकार की आवश्यकता को महसूस किया गया। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैटलॉग कोड्स विश्व के अंदर अवतरित हुए, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हुए। पॉपुलर ये 2 हैं, हर कंट्री का अपना एक अलग कैटलॉग कोड है, एक अलग तरीका है ना। हमारे हिंदुस्तान में ये 2 चलते हैं, लेकिन फिर भी औरों में क्या हो रहा है और कौन कौन से हैं, उनकी थोड़ी सी जानकारी जरूरी है। तो सबसे पहले आइए आइए अगला, चलिए अर्ली स्टेज। एक सेकंड बेटा, इतना ज्यादा तेजी मत चलो ना। अर्ली स्टेज 2050 से 800 एडी बीसी, ये 13, ये सी 800 एडी, ये टू मच अर्ली एज ऑफ, इसे बोलते हैं एंटीक्विटी एज। उसमें some such method through primitive existed almost until the time the manuscript came to end and ceased to be the primary vehicles of communication. The discovery of Astroblonean clay tablets,
the wall inscriptions at Udu and extant remains of the Pyrrhus rules of the Egyptian, Greek, and Roman civilization testify this fact. The catalog and the materials they listed both were in primal form, clay tablets, inscriptions, and papyrus rolls from the archaeological finds of the Astro-Babylonian clay tables. एक प्रकार की सिंपल लिस्टिंग क्ले टैबलेट्स, क्योंकि उस टाइम किताबें प्रिंट मटेरियल नहीं होता था, क्ले टैबलेट समझते हैं तामपत्रों के ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट्स पर लिखना. नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलिए. British Museum cataloging rules. By that time, British Museum cataloging rules came into existence. The invent of printing press had taken place, and the physical form of books were existed. British Museum cataloging rules, known as Panaji's 91 rules. In fact, Panaji did not author the rules all alone and entirely by himself. The code was the result of a collaboration involving the concerted efforts of Edwards, JVW, John J.S. Perry, and Thomas. Lot of people were involved in compiling the 91 rules of, but the team leader was who? Panaji. Therefore, this code was known as the Panaji rules. It was having 91 rules. The final code published in 1841. Next. Charles M.E. Cutter's rules. The name was Charles M.E. Cutter's rules. That he was the librarian of Boston Athenaeum, and the rules were published as a printed dictionary catalog. This was the last library catalog code written by one person. Next. A code of 1908. The first significant code resulting from Anglo-American cooperation was Catalog Rules, Author and Title, entries of 1908, which was prepared jointly by committees of the Library Association and the American Library Association, and contained 174 rules for authors, titles, and associated description. वेटिकन रूल्स, ये तो रटना पड़ेगा आपको. अगर आपको एग्जाम में देना है इस क्वेश्चन का आंसर तो रटना पड़ेगा, इसमें समझने की जरूरत नहीं है. The code was the result of decision taken in 1927 to prepare a new catalog of the printed books in the Vatican Library, Rome, which was in the process of reorganization, since the catalog of the original collection prepared at the end of the 17th century was incomplete and also outmoded. A new up-to-date catalog was contemplated. Then the classified catalog code, जिसकी हम बात कर रहे हैं. The edition appeared in 1934 and was constituted through the 5 editions. The last, that is the 5th edition, coming in 1964. Each later edition was an improvement on the earlier one. The revision, addition, or improvement made on the basis of practical application and critical examination supported by teaching and reasoning. This empirical, analytical, and critical approach shaped the code progressively. You have 6th edition. You have 5th edition of classified catalog code which you are using, and you are using column classification for classification 6th edition. Though the 7th edition is available, but it is not being used simply because it was structured in such a complex way that the things were not easy to handle by the LIA school student and libraries. So it has become a monument on record that 7th edition came under the leadership of it was Bhattacharya and A. Neelam Mangan, but that could by DRTC Bangalore, but it could not be materialized. Then come ALA rules, 2nd edition, definitive edition 1949. Next, chalo. LC descriptive rules. Then ACR 1 1967, ACR 2 1978, and ACR 2R 1988 revised. All of it. Nowadays, ACR 2 has also been tried to be replaced by what? It has been replaced by the, क्या नाम है उसका, मैं दिमाग से निकल गया, वो है RAD, RDA.
resource description access, RDA. Resource description access is there for adopting the cataloging system for non-book material. You have now electronic resources, databases, isn't it? You have full text databases, you have off text databases, and so on. So to handle those kind of databases, the electronic resources, the RDAs came for the purpose of rescue of the librarians for doing cataloging. So this is your history of library catalog code. That is your second aspect of the syllabus. ठीक है? Then physical forms of catalog. खोलो physical forms of catalog खोलो. कैटलॉग के क्या क्या रूप बने, किस किस प्रकार का के रूप का कैटलॉग आपके सामने आया, क्या जर्नी उसने तय करी, और कैसे एज ऑन टुडे द कैटलॉग इन ट्रेडिशनल फॉर्मेट इज अवेलेबल इन 12:7 format. 12.5 into 7.5 is the physical diameter of a library catalog. आइए ये देखिए, in preparation of a library catalog, two aspects its form to be considered are physical or outer form which relate to its, yeah, hello, physical forms of catalog ही है ना. आगे चलना जरा, आगे चलो. हाँ ठीक है, ओके ठीक है. Physical forms of a catalog include the conventional catalog, that is bound register, printed book form, shelf or loose leaf form, card form, and the second is non-conventional, which includes visible index, microform catalog, machine readable catalogs. Bound register form includes written by hand written style. क्या होता था, जैसे मान लीजिए रजिस्टर है ना, इस रजिस्टर पर आपने किताब आती गई और एंट्री करते गए, किताब आती गई और एंट्री करते गए. अब समस्या क्या हुई कि जो किताब आई और आपने एंट्री कर ली, है ना, अब इस आपकी लाइब्रेरी में क्या अवेलेबल है ये जानने के लिए आपको पहले से और आखिरी तक पूरे रजिस्टर को देखना पड़ता था, क्योंकि इट वाज नॉट अरेंज अल्फाबेटिकली और क्लासिफाइड सीक्वेंस, इट वाज जस्ट लिस्टिंग ऑफ, है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जो आती गई आप लिस्ट कर. तो एक लिस्ट तो आपके पास हो गई, भाई ये लिस्ट ये बता तो रही है हमारी लाइब्रेरी में क्या है, लेकिन हमारी लाइब्रेरी में टोटल इतनी किताबें हैं, कौन से ऑथर की कौन से टाइटल की किताब है ये जानकारी देने की पोजीशन में ये कैटलॉग कार्ड, ये कैटलॉग बाउंड जो रजिस्टर था ये नहीं था. ये इजी टू यूज तो था, उठाओ और जहां मर्जी ले जाओ, उठा के घर भी ले जाओ, उठा के कमरे दूसरे कमरे भी ले जाओ, लेकिन ये टाइम सेविंग नहीं था. अगर आपको किताब देखनी है कौन सी अवेलेबल है सारा ही आपको देखना पड़ता. इट कैन बी कंसल्टेड वंस बाय वन, एक एक पेज पलटकर. सेपरेट कार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट अप्रोचेस, ऑथर टाइटल सब्जेक्ट. इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसको अगर ऑथर टाइटल और सब्जेक्ट से अगर आपने सीक्वेंस बनानी है तो सेपरेट सीक्वेंसेस मेंटेन करने की जरूरत थी, जो बाद में कंसेप्ट आया कैटलॉग में, जो फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग में जो कैटलॉग फॉर्म है कार्ड की, कार्ड फॉर्म ऑफ कैटलॉग है उसमें आया. नो स्टैंडर्डाइज्ड एंट्रीज, कौन सी चीज कहाँ लिख दी, ऑथर कब लिख दिया, टाइटल पहले लिख दिया, टाइटल पहले लिख दिया, ऑथर बाद में लिख दिया, ये सब. नेक्स्ट नेक्स्ट printed book form, it is usually standardized because it is based on some kind of code. For example, British Museum Library, now named as British Library, Library of Congress print their catalog in National Library of India printed form to keep the. क्या होता था कि आपका पूरी कलेक्शन को आपने छापा, अब हाथ से नहीं लिख रहे, आपने प्रेस में उस कैटलॉग को दे दिया. जैसे आप शादिया कार्ड छपवाते हैं, है ना जी, अब शादिया कार्ड आपने छपा लिया, अब घर में दूसरी शादी आ गई, दूसरी बहन की या भाई की,
तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन तो कॉमन है, बच्चे का बाप भी कॉमन है, माँ भी कॉमन है ना, बच्चे के भाई बहन भी कॉमन है, लेकिन लड़की ना दूल्हा और दुल्हन चेंज हो गए, तो पहले वाला कार्ड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ना। तो यहां क्या हुआ कि आपने छपवा लिया, अब जो नई किताबें आई उसको फिर आप लिख कर, क्योंकि वो तो दोबारा छप डल नहीं सकती ना, वो तो छप चुकी है, आपको एडिट करनी पड़ेगी। तो जब कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं थे, या मैनुअल टाइपराइटर थे, या मैनुअल प्रेसेस थी, तो आपको रीसेटिंग करनी पड़ती थी, रीटाइपिंग करनी पड़ती थी, रीसाइक्लो स्टाइल करना पड़ता था। लेकिन फिर प्रॉब्लम वही आती थी कि अपडेशन कैसे हो। नेक्स्ट, इसके एडवांटेज लिखे हैं, ये रटने के लिए हैं, लेकिन ये कैटलॉग ना एग्जिस्ट करते हैं और ना इनकी कोई यूजेबिलिटी है आज के जमाने में, क्योंकि आपका पार्ट है, इसलिए आपको बताने की जरूरत है। चलिए, outdated printing is costly, inadequate in showing the accurate stock of collection. This is what I am saying. Next, shelf or loose leaf form. Slips of papers are put into a loose leaf and bound by some mechanical device. आप समझ रहे हैं, इसकी छोटी छोटी स्लिप आप काट ली, फिर इसके ऊपर एंट्री बना ली। अब ये लूज हैं, इसलिए इनको आसान है अरेंज करना। जो अगर आपने इसकी 10 लीव काटी, तो 10 में पहले नंबर पे भी एक रखी जा सकती है और पहले नंबर वाली को 10 नंबर पे भी रखा जा सकता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो अकॉर्डिंगली यू कुड हैव डन इट, लेकिन क्योंकि लीफ का पेपर बहुत ही लो क्वालिटी का होता था, तो बार बार अरेंज करने से फट जाती थी, उनका मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होता था। फिर क्या करते थे, उसको प्लास्टिक की स्ट्रिप में अंदर घुसा के रखते थे, जैसे अपने एटीएम कार्ड वाला रखते हो ना पर्स के अंदर, तो कुछ दिन के बाद इसमें रखते हो प्लास्टिक के, उसके अंदर वो फटना शुरू हो जाता है, ऐसे वो लीव भी फटनी शुरू हो जाती थी, है ना। इसके भी अपने अपने मेरिट डिमेरिट है। क्या एडजस्टेबल था, पोर्टेबल था, फ्लेक्सिबल नेचर था, कैन बी अपडेटेड इजीली, मोर कंपैक्ट एंड ऑक्यूपाई लेस स्पेस। डिसएडवांटेज, ओनली वन रिकॉर्ड इज रिकॉर्डेड इन वन स्लिप, द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट सो एंड सो। फिर कार्ड फॉर्म सबसे पॉपुलर और सबसे फिजिबल और सबसे यूजफुल जो कैटलॉगिंग फिजिकल फॉर्म है, वो कार्ड फॉर्म ऑफ कैटलॉग है, जो 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर का जिसका स्ट्रक्चर होता है। और उसके एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबल इन कीपिंग इट कन्वीनियंट है, इजी टू हैंडल है, रेफरेंस एंड क्रॉस रेफरेंस कार्ड कैन बी प्रोवाइडेड, सेंट्रलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग एडवांटेज कैन बी गॉट। डिसएडवांटेज क्या है, ऑक्यूपाइज लार्ज स्पेस, नॉन मूवेबिलिटी, ग्रेटर मेंटेनेंस कॉस्ट, मैनिपुलेशंस आर मोर। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है, मैनिपुलेशन है। सबसे खतरनाक क्या है, मैनिपुलेशन है। क्यों, क्या होता है कि इसके अंदर जो कैप देखा, कैटलॉग का फोटो खींच रखिए क्या, देखो ये समझो, ओ सॉरी, ये इसको मिटा देना, ये मिटेगा भी नहीं शायद, है। मान लीजिए ये है ना, ये कार्ड है सारे, यहां से ये इसमें ये स्टिक लगी होती है लोहे की, इसको आप खोल लो और बीच में से कार्ड निकाल लो। अब आप किसी ने शरारत करनी हुई, उसने ये कार्ड निकाल लिया, 5-7 कार्ड गायब कर दिए, किताब लाइब्रेरी में है, लेकिन कार्ड कह रहा है कि किताब तो है नहीं। तो मिसचीफ जो लोग हैं, जो स्टूडेंट शरारती लोग हैं, जो बदतमीजी या परेशानी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या स्टाफ की पॉलिटिक्स की वजह से, है ना, परेशानी करने की कोशिश, ये सब इसमें संभव है। मगर बावजूद उसके ये सबसे पॉपुलर फॉर्म है इसमें, ट्रेडिशनल फॉर्म में। बट नाउ ए डेज यू हैव मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग होगा। चलो आगे, चलो आगे भाई। विजिबल इंडेक्स है, माइक्रोफॉर्म है, इस प्रकार का कार्ड होता है, दिखाओ जरा, ऐसा कार्ड होता है, समझ रहे हैं ना। ये एक्चुअल कार्ड नहीं बना हुआ है, कार्ड की जो डायमेंशंस हैं वो ये होती है।
ये कार्ड की डायमेंशन होती हैं, ये 12.5 इंटू 7.5 का कार्ड होता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म है और आज भी लाइब्रेरीज में सारे वर्ल्ड में ये पाया जाता है। अनटिल अनलेस योर लाइब्रेरी कैटलॉग इज कंप्यूटराइज्ड। कंप्यूटराइज तो मशीन में है, समझे ना, वो तो मशीन के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, वो उसका सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे कमर्शियल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर भी आजकल आ रहे हैं, जैसे कोआ आ गया है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। ऐसे ही बहुत सारे ग्रंथालय, ई ग्रंथालय, कुछ कॉमर्शियल भी है, लिप्सिस है, ट्रूडॉन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एलिस फॉर विंडोज है, जो आपका मेंटर जो है यहाँ पर शैलेंद्र कुमार, जो उसका ऑनर है, समझे ना, तो वो है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो दीज आर दी डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, ठीक है। इसके अलावा आपका अब क्या है इसमें यूनिट में, द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कैटलॉग्स। खोलो भाई जरा टाइप्स ऑफ कैटलॉग की पीपीटी खोलो। Now types of catalogs, why they are called types? Because they are made as per the specific features of that particular card. Why they are prepared with specific feature? Because the people has got different approaches to access. यहाँ पर आप जब लोग आए हैं, कुछ बच्चे बाइक से आए होंगे, कुछ बस से आए होंगे, कुछ कार से आए होंगे, कुछ ऑटो करके आए होंगे, कुछ कैब करके आए होंगे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स है ना। और जो कोई पास रह रहा होगा 2500-1000 कदम पे, ऐसा बच्चा भी हो सकता है, वो पैदल ही आ गया होगा। तो डिफरेंट मोड्स हैं और हर मोड की अपनी विशेषता है, अपना फीचर है। तो ऐसे ही लाइब्रेरी में यूजर यानी आपकी इंफॉर्मेशन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अप्रोचेस को सेटिस्फाई करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलॉग बनाए जाते हैं। क्या है? पहला है डिक्शनरी कैटलॉग, अल्फाबेटिक कैटलॉग। जो डिक्शनरी कैटलॉग मतलब एक कैटलॉग which is prepared and the entries of that catalog are arranged alphabetically as per dictionary pattern. डिक्शनरी किसकी को यूज नहीं करनी आती? सबको यूज करनी आती है ना डिक्शनरी, है ना। तो डिक्शनरी पैटर्न के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली, है ना, अल्फाबेटिक पैटर्न में भी दो सीक्वेंसेस होती हैं, एक लेटर बाय लेटर और एक वर्ड बाय वर्ड। देयर आर टू सीक्वेंसेस, टू वेज टू अरेंज द एंट्रीज ऑफ ए कैटलॉग। देन देयर आर कैटलॉग, ऑथर कैटलॉग। ऑथर कैटलॉग मींस द कैटलॉग व्हिच इज अरेंज्ड अंडर द नेम ऑफ ए ऑथर। तो आप सबके नाम है ना, आप सबने किताब लिखी है, मेरी लाइब्रेरी में आपकी सबकी लिखी हुई किताब है, तो आपके नाम से जो कैटलॉग बनेगा दैट इज कॉल्ड ऑथर कैटलॉग। ऑथर कैटलॉग, अंडरस्टैंड, है ना, समझ रहे हैं ना बात को। अब उसकी रेंडरिंग कैसे होती है, चॉइस एंड रेंडरिंग आपका थर्ड यूनिट है। अगर मैं आया बाई चांस तो मैं आपको बताऊंगा, और अगर नहीं आया तो जो होगा वो बताएगा आपको आके, ठीक है। देन है नेम कैटलॉग। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कैटलॉग and 99% library professionals in this country do not know what this type of catalog is. आपके मटेरियल के अंदर भी ये इंक्लूडेड नहीं था। when I came to know, as now I am the head of entire your SOL and other things, so I just pointed out that this particular segment is not there in your booklet of library cataloging B-109. I pointed it out, and then a specific aspect was got inserted on this. Basically what happens is name catalog और author catalog दोनों सिमिलर से लगते हैं, है ना। दोनों सिमिलर से लगने के बावजूद भी दोनों में अंतर है, दोनों में एक अंतर है। जैसे आपके ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस और पर्पस में सिमिलर से होने के बावजूद भी एक स्लाइटली सा अंतर है। तो नेम कैटलॉग में क्या होता है, नेम कैटलॉग्स आर मेड अंडर द नेम ऑफ वन पर्सन। से फॉर एग्जांपल ऑल द बुक्स ऑफ रंगनाथन, all the books written by somebody on Ranganathan. Understand? Mahatma Gandhi himself has written books,
and people around the world have written books on Mahatma Gandhi. When the catalog will be made, whether I have written the book on Mahatma Gandhi or you have written the book on Mahatma Gandhi, but in order to make all the books written on Mahatma Gandhi at one place, in one sequence, the cards are arranged, cards are made under the name of Mahatma Gandhi. So, book written on Mahatma Gandhi by Mr. X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, F, they all are not made under A, B, C, D, G, F, made under Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi. So, all the cards will be arranged one after the other, Mahatma Gandhi. तो सारा का सारा आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा. अल्फाबेटिक में क्या होता है, अल्फाबेटिक में भटकना पड़ता है ना, क्योंकि ए तो ए जगह आएगा और डी डी जगह आएगा और एक्स एक्स जगह आएगा. लेकिन यहां पे क्या है, महात्मा गांधी एम एक वर्ड के साथ सारा आ रहा है, राकेश की भी, दिनेश की भी, सुरेश की भी, महेश की भी, गुप्ता जी की भी, वर्मा जी की भी, सबकी, लेकिन किताब काय में महात्मा. तो नेम कैटलॉग इज अंडर द पर्सन who has written the books, and the books which has been written on him is called as name author. Then you have subject catalog. Subject catalogs, as I told you, that you may not be knowing the author or title, but what you know is the subject. So the catalog which are made under the sequence of subject are called subject catalog. Subject catalogs can be driven by using two type of sequences. One is the subject catalog driven by using chain procedure. You use column classification number and then you open it by following three links: short link, unshort link, or false link. Okay, and then these short links, which are the short links, are being used for the purpose of driving subject heading. वो कैसे बनता है क्लासिफाइड कैटलॉग और डिक्शनरी कैटलॉग, जब कोई पढ़ाएगा या मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा. ठीक है. The another is the Sears list of subject heading. There are two lists of subject headings which are in your syllabus. One is Sears list of subject heading and Library of Congress list of subject heading. तो उन दो में ready-made subjects are being there. You will have to see which of the subject of your book is matching to the subject which will be given in the list. You take it from there and then do it. And these subjects are arranged in their list on a specific pattern. जो जब आपको सीयर लिस्ट या एलसी लिस्ट पढ़ाई जाएगी तब आपको बताया जाएगा. ठीक है. देन द डिक्शनरी कैटलॉग. डिक्शनरी कैटलॉग इज द अल्फाबेटिक कैटलॉग. ऑल द एंट्रीज आर अरेंज according to alphabetic sequence, whether author, whether title, whether subject, whether name, every entry is arranged alphabetically. This is the most popular way of arranging the catalog card in the libraries, alphabetic catalog. Reason being is that the people either may be knowing author's name or title or whatever, and therefore alphabetically he or she will search and find it out. Then is the classified catalog or class catalog. These are the catalog which are made as per the classification number. जैसे column classification में books are being classified. Let's say for example library science books. So you say 2 is the basic class for library science. Library cataloging, you say 2:3 1 library classification. Then you say 2:5 1 or whatever. Understand? Documentation, library documentation, 2:9 7. So those cards are arranged according to classificatory sequence. Understand? DDC also being used for classificatory sequence that start from 0012 to 999, and in between they are being arranged according to the numbering, and you keep the books on shelf according to that. Then alphabetical class catalog. This catalog is having alphabetic arrangement as well as carrying the classification number of it. Sears list of subject heading is a good example of it. Subjects are arranged alphabetically, but whatever subjects are arranged alphabetically, the classification number of that subject is also given therein. So ये आपके हैं types of catalogs. ठीक है. ये आपके इस यूनिट तक का, एक बेटा सारा ब्राउज करके दिखा दो जरा एक बार इनको ना. आराम 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 आराम. आप देख रहे हैं
कि Ranganathan, father of Indian librarianship by B.K. Sen. Ranganathan, the international leader by John Miller. Now the books have been written by ये author, उसकी ये name catalog की बात है. Understand? कि रंगानाथन ने खुद भी किताबें लिखी और रंगानाथन ने भी किताब लिखी. और आगे चलो. Name series example, Chandok Publishers, ABC series of library science, endowment lecture series of library science. That means the books are written under series. आप जितने भी एपिसोड देखते हैं ना, वो एक सीरीज के तहत आते हैं, है ना. आश्रम सीरीज 3 हैज कम, फर्स्ट 2 ऑलरेडी केम, वो धर्मेंद्र के लड़के की. तो सीरीज वाइज ऐसे ही आपकी किताबें भी सीरीज के अंदर छपती हैं. तो वो भी सीरीज के नाम से भी द कैटलॉग टेल्स यू. दिस इज आल्सो ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ ए लाइब्रेरी कैटलॉग, that it tells you the information about the availability of the book in the library according to the name of the series. Yeah. Then name place, Delhi University, Gujarat University. Next, CS लिस्टर सब्जेक्ट है ही सब्जेक्ट कैटलॉग में, लाइब्रेरी अकाउंट, पॉप्सी प्रेसेस. ये इंडेक्सिंग सिस्टम्स हैं, पॉप्सियन प्रेसेस, पोस्टग्रेड बेस्ड इंडेक्सिंग सिस्टम, प्री रिजर्व कॉन्टेस्ट इंडेक्सिंग सिस्टम. Okay, next. These are the dictionary catalog, is always alphabetic catalog as well as classified catalog. Next चलो. देख रहे हैं टू लाइब्रेरी साइंस, पॉलिटिकल W, इंडियन हिस्ट्री V44 और DDC में क्या है, लाइब्रेरी साइंस 202, पॉलिटिकल 320, इंडियन हिस्ट्री 954. ठीक है. अच्छा ये रहना दी. चॉइस एंड रेंडरिंग ऑफ हेडिंग, ये आपका 3rd यूनिट है, इसको बाद में बात करेंगे. इसको हटा ले भाई. चॉइस एंड रेंडरिंग ऑफ हेडिंग को बेटा अलग से कर लेना इसको ना, ये इसका पार्ट नहीं है. ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड्स, एज फार एज योर फर्स्ट यूनिट इज कंसर्न, आई हैव ट्राइड टू एलोबरेट एंड ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कॉन्सेप्ट. And I am sure that majority of you might have understood what is what. But always remember, a teacher can teach you, but a teacher cannot teach you everything. Because there is a time limitation, because there is an environmental limitation, there because of other limitations of. So you have to supplement your reading by using library resources, the content which has been supplied to you, the course material which has been made available to you. If you read, if you prepare together, then whatever has been taught to you, because it is there in your sub mind, and if you read today itself after going from here, then it will become the part of permanent memory of yourselves. Then you will not forget, you will understand everything. But if you read after 10 days, 15 days, or a month, thinking that एग्जामिनेशन जब आएगा जब पढ़ लेंगे, देन जो कुछ आपको पढ़ाया वो सब सफा. अंडरस्टैंड. तो माय सजेशन, माय एडवाइस is that every one of you should read whatever is being taught to you in the class by anybody and update your knowledge, take your class notes, prepare your notes for examination and do your best. It's a very wonderful profession, I tell you. It is one of the best professions professionally available. Unfortunately, and this unfortunate is applicable in almost every discipline of life, every discipline. Understand? So scarcity of jobs are there, but at the same time, scarcity of jobs does not mean that the jobs in library science are not available. But you will have to prove that you are the best out of the slot. And this always happens, even in politics. If you are the best, you are the prime minister. There are many cabinet ministers and many member of parliaments and so on. But the prime minister is only one. Why he is the prime minister? Because he is chosen that he is the best out of the all. Isn't it? Why the vice chancellor is one? There are thousands and thousands of teachers. Reason being is that he happens to be the best out of the all.
isn't it? So when you will be selected because you are the best out of the slot being called for interview, or you will be selected because you are the best out of the written test being communicated. So you have to be the best. There is no shortcut method for getting your success. You have to be the best, and that will only be when you are serious enough in preparing your studies, whatever has been taught, supplement it, read your text material supplied to you, or the books, or the information resources available in public domain, or internet, or whatever, and then update your knowledge and become the best out of the all. Thank you very much.